Now, which are the modern methods of irrigation? In the modern method of irrigation, generally we are using pumps and motor. Motor to lift the water from the source and pump to carry the water from one place to another place. As the water level of the ground has decreasing day by day, what we have to use is we have to go for the different techniques, different methods, different ideas, so that anyhow we can irrigate our farm. So pumps were used in the beginning, right? Because at that time, as compared to today, means before few decades, as compared to today, plenty of water was available. Clear? So directly by pump, water was lifted out from the wells, tube wells, or from river beds as well, and was provided freely, means in the huge source of water to the farm. Understand? After that, when the water has become scarce, मतलब पानी की मात्रा जो है ग्राउंड में वो कम होती जा रही थी. At that time, we have moved forward for the some new technologies that are sprinkler system and drip irrigation system. First, we'll talk about the sprinkler system. इसके नाम की जैसे ये स्प्रिंकल करता है वाटर. कैसे? Suppose ये आपका पूरा फार्म है. This is our farm. In that farm, the pipes are fixed, right? And that pipes are, अगर ये पाइप है तो उसको परपेंडिकुलर ऐसा एक वर्टिकली पाइप फिक्स किया जाता है ऐसा. And that pipe has a nozzle at the top. ये परपेंडिकुलर है, nozzle at the top. That nozzle is a 360 degree 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू नीड रोटेटिंग नोजल होता है. मीन्स उससे क्या होता है, व्हेन वी स्विच ऑन द मोटर फॉर द सप्लाई ऑफ वाटर, दैट टाइम वाटर रन्स थ्रू दीज पाइप्स एंड गेट इनटू द अपवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ वाटर. एंड व्हेन इट इज कमिंग आउट, आपने वो फाउंटेन्स वगैरह देखे ना, फाउंटेन्स में कैसे पानी निकलता है बाहर, लेकिन इसका स्प्रिंकलर का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है बिकॉज नोजल के जो ओपनिंग होते हैं वो छोटे छोटे रहते हैं. एंड दैट नोजल इज रोटेटिंग इन ऑल डायरेक्शन, इट्स ऑल डायरेक्शन. सो वाटर इज गेटिंग स्प्रिंकल्ड अराउंड द होल फील्ड, होल फार्म. अंडरस्टैंड? इट्स लाइक अ रेनफॉल. रेनफॉल में कैसे पूरा ऐसा खेत ऊपर से गीला हो जाता है, एंड अल्टीमेटली स्लोली the farm is getting irrigated like that. अभी ये जो सिस्टम है ये दो चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. कौन से? जहाँ पे लैंड अनइवन है, where there is a land uneven form, that time we can use sprinkler system. Clear? Then apart from this, when we are taking cereal crops, I told you which type of crops are there. मतलब जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रो वाइज, कॉलम वाइज, पूरे खेती में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके लिए भी स्प्रिंकलर सिस्टम काफी बेनिफिशियल है. उससे क्या होता है, इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस एंड इट सेव्स द वाटर. It saves unnecessary wastage of water. Clear? Now next we move towards the modern technique जिसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम. ये भी नाम की जैसी है, ड्रिप. नाउ हियर अगेन सपोज दिस इज आवर फार्म. Drip irrigation system is mainly carried out in the field of fruit vegetable fruit plants like fruit orchards and the crops which are cultivated on particular distance from one another, right? So here the pipes are sprayed in the farm. खेती वो पूरे स्प्रेड किए जाते हैं. आपने भी देखा होगा कैसे ब्लैक कलर के छोटे छोटे पाइप्स आते हैं एंड दे हैव होल ऑन दैम. नाउ these holes we have to adjust it where there is a crop. So what happens? The water is leaked on the बेस ऑफ द, ये जो आपका क्रॉप है, सपोज ये आपका क्रॉप प्लांट है, तो इसके जो बेस है, इसका जो बेस है, वेयर इट इज गेटिंग डीप इनटू द सॉइल, एट दैट प्लेस दैट वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप.
and ultimately the water percolate into the soil and roots are getting water for their absorption. So things which are taking place because of this drip irrigation, as first in sprinkler system, it saves the water, it reduce the unnecessary use of water. मतलब आपको सिर्फ इन प्लांट्स को पानी देना है, उसके लिए आप अगर एक पूरा फार्म इरिगेट कर रहे हो तो पानी का कितना वेस्टेज होता है, यू कैन इमेजिन. So specifically we are giving only at that place where it is necessary. So these are the modern methods of irrigation. Now irrigation is over. In next session we will talk about harvesting. Is it clear? Till that time you read and write about this. For the more understanding of traditional methods, you can see the diagrams which are given in the textbook. Okay? Thank you.